मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूं। और आज पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के नाते हाल ही में श्रीलंका में संपन्न एशियाई देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो इस माह 18 तारीख से लेकर 22 तक जो विश्व में परिवर्तन हो रहा है, गत कुछ वर्षों में और कुछ दशकों में राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से लगभग 300 वर्षों के बाद फिर से एशिया वह ताकत प्राप्त कर रही है जो 300 वर्ष पहले दुनिया में जिस ताकत के साथ हम काम करते थे, और चाहे वो व्यापार वाणिज्य में हो, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में हो, चाहे वो उत्पादन के संदर्भ में हो, चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी के संदर्भ में हो, in terms of trade, in terms of employment, in terms of income, by all indicators, there is a clear, perceptible shift of the power towards Asia after 300 years, after experiencing colonial consequences and other problems. Now Asia is emerging as a continent, as a powerhouse, and regaining its glory. So conference was organized in Colombo this time to create a consciousness that by connecting the Asian countries and its people, we can create the Asian century. This has been the theme in this conference, organized by one initiative, International Congress of Asian Political Parties. This they normally do every year in different countries of Asia. This time, this conference has been organized in Colombo. In the conference, the deliberations were there on all aspects of the shift of the situation, the change in the situation, and the impediments were also discussed in building the Asian community. Myself and Vijay Jolly from BJP, we have represented in this Congress, in this conference. And a very important thing in this conference was this got support from both government and opposition of Sri Lanka. President His Excellency Mahendra Rajapakse and opposition leader Ranil Wickremesinghe both had taken part in this conference.
So a good scene to see and experience, both the government and the opposition taking active part in holding the conference uh, for the benefit of the Asian development. The challenges, particularly the technology aspect and the poverty issue. Technology which I am mentioning here because the technology in Asia, there are few countries which are in a position to become the providers of technology, and there are few countries which are in Asia capable of using the technologies. So technology users and technology producers, both are there in Asia. So the Asia's connectivity there is a perfect match for, possibility is there. So all these things were discussed. On the sidelines of this conference, we have met with President of Sri Lanka, Mahinda Rajapakse. We have also had an opportunity to meet Ranil Wickremesinghe, opposition leader, all stakeholders of the Sri Lankan political system and process. Tamil National Alliance, Tamil Muslim Congress, and the Ceylon Workers' Party, which represents the upcountry Tamilians in Sri Lanka. There are two categories of Tamilians in Sri Lanka. One is in north and east, and there is another upcountry, normally who are working in the plantations. Very big community. So we could meet the political representatives of upcountry Tamilians also, and we could also meet the business community and representatives, associations, and other leaders, different stakeholders. So in this, I would like to share with you, there was a discussion before our departure from here that BJP delegates should not take part in the conference. In Tamil Nadu, there are people who feel that Sri Lankan government is not attending to the issues the way it should have been. We have the same view about the concerns of Tamilians and also the fishermen of Tamil Nadu in the same way, but we felt engagement is always important, and so taking part in the conference will provide an opportunity to discuss formally and also informally. With that view, we had taken part in the conference. One, the issue of the Tamil Nadu fishermen. Very important issue which is linked to lakhs of fishermen who are poor and who come from the socially backward and weak sections, suffering from this problem and affected by the kind of developments which have taken place. So we have discussed this issue with the government. There is a positive development after BJP-led NDA government came into power. 94 fishermen had so far been released, छोड़ दिया है उनको, किंतु अभी भी ट्रॉलर्स जो है, जो मछुआरों की ट्रॉलर्स हैं, उन ट्रॉलर्स को सरकार वहाँ पर रखी हुई है, उनको छोड़ा नहीं है. तो हमने सरकार के साथ ये कहा है कि मछुआरों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और उन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर के सोचना चाहिए और लचीला होकर के सोचना चाहिए और सृजनात्मक ढंग से उस समस्या का समाधान करना चाहिए. और समस्याओं का समाधान जल्दी करने से श्रीलंका के सरकार के प्रति और श्रीलंका के प्रति भारत में
एक प्रकार से अच्छे गुणात्मक अंतर, पॉजिटिव गुडविल डेवलप होगा, ये बात हमने वहां पर कहा। और जो अभी तक 72 ट्रॉलर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए, ये हमने राष्ट्राध्यक्ष से उनके साथ हमने रखा। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, रेजोल्यूशन थ्रू डेवल्यूशन। फिनिशिंग ऑफ टेररिज्म शुड नॉट बी टेकन एज फिनिशिंग ऑफ द प्रॉब्लम. You should not be equating with that. Problem is still there, and people still feel that the government is not taking initiative and creating the confidence among the Tamil leadership and Tamil people so as to take part in the negotiations so that the devolution can become a reality which has been promised by Sri Lankan government. And there is another aspect to this. The upcountry Tamil people who are in the plantations, who do not have even the proper housing till date, so it should be taken up seriously. We could utilize this opportunity to impress upon. And the fourth aspect I would like to share, very important thing is, after our leader, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has come into power, the tourism has become the issue of discussion in India and in the whole of South Asia. श्रीलंका और भारत के बीच में हिंदू और बुद्धिस्ट ये टूरिस्ट सर्क्यूट्स क्रिएट करने से दोनों देशों के बीच में लोगों के आने जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संभावना है। और इन संभावनाओं के बारे में, चाहे वो बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, और श्रीलंका के अंदर भी हिंदू लोगों के लिए वहाँ जाने के लिए कई ऐसे स्थान बनते हैं। इस विषय पर आने वाले दिनों में इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक संबंध अच्छे मजबूत उसके नींव पर खड़े होंगे। इस प्रकार की बात हमने सरकार के सामने रखा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार के साथ और बाकी अन्य दलों के साथ बात करते समय और उस कॉन्फ्रेंस में भी एक गुणात्मक अंतर हमने देखा है कि इस सरकार के साथ उनकी अपेक्षाएं बढ़ी है और अपेक्षाओं के नज़रों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्याओं के संदर्भ में हम इन सारे विषयों पर आगे जा सकते हैं, ऐसे विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मत है कि आने वाले दिनों में विशेषकर तमिलनाडु के फिशरमैन समस्या को श्रीलंका की सरकार जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद।